So today we discuss about the history of Java. The Sun Microsystem is a developing company. They assign a tax to develop a software for a consumer electronic device. So at that timing, the developer think for that the C and C++ language is a model language for developing this kind of language. But later, while they develop this particular language, particular software by taking the use of C and C++, they found there is a compatibility issue. Means after developing the software by using C and C++ language, it is not fitted with that particular device. It needs the specific kind of configuration must be changed on the device. So if I'm a client, if I'm using your software, it is not possible for using your software. I have to again make my device or configure my new device. So that the entire developer team, like the James Gosling and the Sun Microsystem, trying to create another programming language which can be installed or which can be fitted with any operating system or in any device. So at that timing, they take the help of C and C++ language and they develop the language and give its name as Oak. Oak is a tree in USA which gives coffee. The entire developer team sat in a cafeteria and they think for that, for the good quality of coffee, they able to develop this particular language so that they give its name as Oak. Later, the Oak is renamed to the Java. It is a complete history of Java. In 1990, Sun Microsystem developed a software to manipulate the electronic device. So in 1990, Sun Microsystem team assigned a task to develop a software. In 1991, a new language named Oak was introduced. So in a span of only 1 year, the developer team managed to create another programming language. In 1993, World Wide Web, WWW, it appeared on the internet that transformed the text-based internet to the graphical internet. It transformed the text-based internet to the graphical internet. Like before 1991, when you are using the internet concept, okay, वहां पर जो internet concept हम use कर रहे थे, तो they are only using the text-based internet. So graphical internet is not present. So later, in 1993, graphical internet has come. So after the graphical internet has come in 1993, to access this kind of website, Java developer team is developing another browser for accessing the internet, that is called the Hot Java. मतलब जब graphical internet आया, इसको access करने के लिए Hot Java बोलकर एक browser बनाएगा. In 1996, Java was established as an object-oriented language. तो Java object-oriented language का आपका जो क्या है, उसको जो authority मिल गया in 1996. So formally, the first version of Java is introduced in the year of 1996. 1996 में वो introduced हुआ. So what are the characteristics of Java? So it is simple. Java is simple. It is object oriented, compiled and interpreted, portable, distributed and secure.
So why it is simple? Because the pointer concept is removed in Java. For memory allocation and deallocation, it is automatically happen in the Java by using of constructor and destructor concept. Constructor और destructor आगे पढ़ेंगे, तो ये जो memory management automatic यहाँ पर होगा. तो इसलिए it is very simple that you are not bother about that where to store your element. जैसे कि आप कॉलेज का सीट पे जब बैठते हो, so you are having your favorite seat. तो ऑटोमेटिकली जब आप हर दिन वहां पर आते हो तो आपका करस्पॉन्डिंग सीट में आप बैठ जाते. So that it is simple. Object oriented means Java support the object orientation approach to develop the program. That means you can extend the functionality of the Java by adding the new functionality on it by using object orientation. Next, compiled and interpreter. Any system that doesn't understand the programming language, the computer जो है वो इंसान का जो language है वो समझ नहीं सकता. Computer is a electronic device. It is only understand the 0 and 1 format. वो सिर्फ 0 and 1 format को समझता है. So when you are passing the instruction to the computer and when you're trying to give all the instruction into the 0 and 1 format, it is not possible for a person to remember all the command into the 0 and 1 format. वो 0 and 1 format पे सारा command आप याद नहीं रख सकते. So to provide the instruction to the computer, we have to use the programming language. So there are different programming languages we're using, like C, C++, Java, Python. So these are the different languages, .NET, these are the different languages we're using. Is computer understand this language? No, computer doesn't understand only language. Computer only understand the 0 and 1 format. Then how you have to convert this programming language into the 0 and 1 format? For converting, तो आपको 0 and 1 format में instruction अगर आपको भेजना है, so you have to use a programming language. But computer doesn't understand the programming language. So now the concept of compiler is coming in. The compiler converting your programming language into the machine language at one, and the process that is involved for compilation involves to convert the programming language into machine language is called as the compilation. So what is that compiler? Compiler that is used to convert programming language to programming language to machine language at one. The process that is used to convert
Programming language to machine language. Programming language to machine language is called compilation. Is called compilation. The process of converting programming language to machine language is called as a compilation, and compiler is used to convert the programming language into machine language at one go. Okay, so write these 2 points of compiler and compilation. Sir, your voice is very low. Is it my voice is low? मतलब Yes, sir, कभी कभी now. क्रैक हो रहा है, कभी कभी लो हो रहा है। ये मतलब आप माइक को मुंह के पास ले जाके बात कीजिए। एक सेकंड, मैं घूमने के बाद वो स्लो हो रहा है। एक सेकंड आप लिखिए, मैं करता हूँ। Okay. So compiled and interpreted. So already we have the knowledge about the compiler. Compiler is used for converting the programming language into the machine language at one go. Okay. So now we have to find the difference between compiler and interpreter. So what is actually the difference is present? Now I think I am audible properly. Yes, sir. So now check, when you are using interpreter, suppose you have the lines of code like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So I have 10 lines of code. So when I use interpreter, then what happens? It is check every statement. एक लाइन को चेक करेगा, एक लाइन को चेक करेगा, फिर at लास्ट तक पहुंचेगा। सपोज आप ऐसा चेक करके करके लास्ट 9 नंबर लाइन पर है, और 9 नंबर लाइन में यू आर फाइंड द एरर। तो आपका 9 नंबर लाइन में एरर आ गया। तो नाउ यू आर हैविंग ए सॉल्यूशन। यहाँ पर आप सॉल्यूशन किए, यहाँ पर आप इंटरप्रेटर यूज कर रहे हो, यहाँ पर एरर आया, इस लाइन में एरर आया, तो आप एरर सॉल्व हो गया। एरर सॉल्व होने के बाद फिर से जब आप शुरू करोगे कंपाइलेशन, अगेन बिगिनिंग से शुरू होगा, फिर से 1 2 3 4 5। तो आप सोचो, अगर आप 1 लाख 2 लाख लाइन्स ऑफ कोडिंग आप लिख रहे हो एंड यू आर यूजिंग द इंटरप्रेटर, देन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फाइंडिंग। अगर आप लास्ट लाइन में पहुंच कर आपका एरर आ जाता है, अगेन फिर से शुरुआत से कंपाइलेशन होगा एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। So in that situation, the compiler play the very important role. तो compiler क्या करता है? इंटरप्रेटर, यहाँ पर जावा क्या यूज कर रहा है ना, compiler और इंटरप्रेटर बोथ यूज कर रहा है। तो इंटरप्रेटर
बहुत अच्छा काम किया, एक एक करके सबको चेक किया। लेकिन अगर कहीं पर एरर आता है तो वहां पर वो फिर से शुरुआत में चला जाता है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक एक लाइन को चेक करेगा, अगर किस लाइन पर एरर आएगा तो वो बिगिनिंग से शुरू नहीं होगा। तो इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन बिकॉज कंपाइलर इज एक्टिंग हियर। So as you are using Java, so compiler and interpreter both are working so that while you are working or while you are checking all your code, it is stored in a location. Okay, एक बार one वो minute, sir. चेक कर, हाँ बोलो। सर सर क्वेश्चन ये है, सर इंटरप्रेटर का धर्म ये है, काम ये है कि अगर किसी भी लाइन में वो एरर मिला तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, इंटरप्रेटर वहीं से ब्रेक हो जाएगा। नहीं सेकंड नहीं, ऑफ ऑल कंपाइलर का काम है कि कंपाइलेशन का काम है कि मतलब अगर कहीं पे भी एरर मिला सिर्फ उस जगह पे ही एरर दिखाएगा, लेकिन कोड रन कर देगा। लेकिन कोड रन कर जावा देगा, पर लेकिन वो कंपाइलर का एक्चुअल काम क्या है, वो एट ए टाइम प्रोग्राम को लोड कर रहा है। सपोज मैं आपको बोलूंगा, सपोज फोर्थ फ्लोर में, मैं फोर्थ फ्लोर में हूं और नीचे 10 तो पानी का बोतल है। तो मैं आपको हाँ बोलूंगा पानी बोतल लाओ, तो आप क्या करोगे, पहले गए एक, दोबारा गए एक, तो आप 10 बार जाकर 10 पानी बोतल लाए। कंपाइलर क्या फिर तो करेगा, एक ही साथ वो लेकर एक आए। बारी में सब कुछ लेके आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो सब कुछ लेकर चला आएगा, एक ही बार लेकर आएगा। मतलब कंपाइलर जब आएगा ये पूरा लेकर आ जाएगा, उसके बाद उसको इंटरप्रेटर को बोलेगा तो भाई तू अभी चेक कर एक एक कर। तो इंटरप्रेटर चेक किया, इंटरप्रेटर बोला कि नहीं 9 नंबर में एरर है, मैं पहले जाऊं। कंपाइलर नहीं बोलेगा कि तुम पहले में जाओ, ये मैं ऑलरेडी, तुम जो चेक कर रहे हो वो करेक्ट है, मेरे पास स्टोर है, तुमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व करके नेक्स्ट में करें। ओ अब मैं समझा, मतलब कंपाइलर का काम जैसे कि जावा पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर बहुत एक साथ मिल के काम कर रहा है। मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर अगर इंटरप्रेटर सिर्फ पाइथन में अगर इंटरप्रेटर सिर्फ होता तो वही पे ब्लॉक हो जाता, फिर से पहले से स्टेप चला जाता। हाँ हाँ हाँ, मतलब लाइन ठीक है बाय सर, लाइन एग्जीक्यूशन पाइथन में होता है लाइन बाय अगर। लाइन एग्जीक्यूट हो जाता। हाँ, तो इसमें क्या होगा, मतलब अगर एरर होगा फिर से लिखो एक लाइन। ओके, ठीक है ठीक। so it is the actual work of compiler and interpreter. So in Java, so both compiler and interpreter both are working. Okay, so ये हो गया compiler and interpreter. Next है portable. Portable is the ability, it refers to the ability of a program to run on any platform without changing the source code. अच्छा, जब हम सी प्रोग्राम लिखते हैं, सो यू कैन रन द सी प्रोग्राम इन ए टर्बो सी, यू कैन रन द सी प्रोग्राम इन विजुअल स्टूडियो, यू कैन रन द सी प्रोग्राम इन द नेटविंड। जब हम टर्बो सी में लिखेंगे सी प्रोग्राम, तो वहां पर क्या होता है, देखिए ना, टर्बो सी में अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पर हम शुरू करेंगे, सपोज हाश इंक्लूड, हाश इंक्लूड stdio io.h, ये लिखे, वॉइड मेन लिखे और int मेन जो भी है, और आपका प्रोग्राम यहाँ पर आ गया। अगर हम वही सेम प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमको और एक लाइन लिखना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस std, ये यूज किया जाएगा, एक लाइन और एक लाइन लिखा जाएगा। जैसे कि आपका प्लेटफॉर्म चेंज होगा उस तरह से आपका क्या होगा, कोडिंग भी चेंज होगा। किस जगह पर आपको यूज करना पड़ेगा, हाश इंक्लूड conio.h, ये आपको टर्बोसी में आपको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरा प्लेटफॉर्म में जाओगे, अगर जो विजुअल स्टूडियो में करोगे तो एक conio.h का जरूरत नहीं। conio.h के अंदर क्या रहता है ना, गेट ch रहता है, तो मुझे यहाँ पर गेट ch का कोई जरूरत नहीं विजुअल स्टूडियो में, लेकिन टर्बोसी में आपको करना पड़ता है। मतलब आप जितना भी प्लेटफॉर्म चेंज करोगे तो उसके हिसाब से आपका कोडिंग चेंज होता है। तो इसलिए क्या होता है ना, प्रोग्राम के मन में कंफ्यूजन रहता है, तो कौन सा कोडिंग कब लिखना है, कौन सा प्लेटफॉर्म में क्या कोडिंग लिखना है, तो कोडिंग चेंज हो जाता है। लेकिन जावा में इस तरह से नहीं होता है। तो यू आर यूजिंग द सेम कोडिंग थ्रू आउट द प्रोग्राम पूरा थ्रू आउट में आप सेम कोडिंग आप यहाँ पर यूज करोगे।
तो पोर्टेबल रेफर्स टू द एबिलिटी, मतलब एवरी डिवाइस में वो काम कर सकता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? योर प्रोग्राम कैन रन इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। पोर्टेबल means your application can run in any device, that is called a portable. Next, if you see this figure, so first of all, when you write the program in Java, so it's stored with the extension of .java. Then we are using compiler. So Java compiler का नाम है Java C. So Java C is the compiler name. When you compile the Java application, it created .class file. If you run any Java application, then automatically it is created .class file. It means what? Suppose when I write a program in Java, if I write a program in Java, if file name is abc.java, so after compilation, it create another file abc.class. ये automatic create होता है. This class file, it is nothing but it contains the byte code, which contain the code into the 0 and 1 format, symbolical format. Anybody is jealousy with you, you are writing a project, you are creating a project, वो jealous हो गया, तो भाई ये कैसे प्रोजेक्ट बना दिया, तो ये चुपके से क्या करेगा, आपका फाइल को डिलीट कर देगा. तो आप बोलोगे भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास क्लास फाइल है, तो आप क्लास फाइल रख लेना और किसी भी प्लेटफॉर्म में आप रन करो, आपका रिजल्ट. तो आपका आउटपुट का मतलब, तो मेरा आउटपुट यहाँ पर. So it contains the byte code, and if anybody wants to tampering this byte code, कोई अगर एबीसी क्लास कोड को तो हैक कर नहीं पाएगा, क्योंकि इनकैप्सुलेशन के लिए वो एबीसी क्लास कोड आप ही चला पाएंगे, दूसरा तो कोई चला नहीं पाएगा. क्या है, मतलब अगर एबीसी जावा कोई डिलीट भी कर दे और आपके पास एबीसी क्लास है, तो इनकैप्सुलेशन की वजह से तो वो सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाएंगे, दूसरा तो कोई एक्सेस कर नहीं पाएगा. नहीं, हाँ, ये कोई दूसरा आदमी एक्सेस नहीं कर पाएगा. और इसको अगर ओपन करोगे, उसमें आपका सिर्फ सिंबल ही रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर क्या लिखा है. ओके, उसको वो डिकोड नहीं कर पाएगा. ओके, बट सोर्स कोड अगर ले जाएगा तो उसको पता चल जाएगा. अगर ये बाइट कोड को लेकर ही हम हर एक प्लेटफॉर्म में रन करते हैं एप्लीकेशन, तो ऑटोमेटिकली ये बाइट कोड क्रिएट होता है. अगर आपका होस्टिंग करना है और एप्लीकेशन को रन करना है, तो ये बाइट को लेकर ही हम इसको रन करते हैं एप्लीकेशन. सो दैट इज द, वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया. बाइट कोड कंटेन द 0 and 1 फॉर्मेट. देन यहां पर फिर से जेवीएम यूज होगा. जेवीएम क्या करेगा, विंडोज के लिए एक जेवीएम अलग रहेगा, यूनिक्स के लिए जेवीएम अलग रहेगा, मासेंटो के लिए जेवीएम अलग रहेगा. तो ये जेवीएम क्या है? जेवीएम stands for Java Virtual Machine. When you are using any language, like you are using English, you are using Hindi, you are using any language in the world, they are having some kind of dictionary. उनका dictionary रहता है. The similar way, for writing the program in Java, all the rules and regulations that is defined in the JVM, Java को किस तरह से लिखना है, उसका rules क्या है, वो सब JVM में आपका define. Now see that JVM is a platform dependent. Okay, sorry, JVM, Java is a platform independent, लेकिन JVM आपको platform dependent है. मतलब अगर आपको जावा रन करना है, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जेवीएम को इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो विंडोज के लिए अलग रहेगा, यूनिक्स के लिए अलग रहेगा, मासेंटो के लिए अलग रहेगा. तो एक सिनेरियो देख लीजिए. डॉट जावा फाइल, सपोज पीएम मोदी इज गोइंग टू द यूनाइटेड नेशन एंड गिविंग अ स्पीच इन हिंदी. ये बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर जाकर हिंदी में बोलते हैं, तो हम प्राउड फील करते हैं, वहां पर हमारा हिंदी नेशनल लैंग्वेज यूज किया गया. तो इज एवरी पर्सन इज सो स्मार्ट दे अंडरस्टैंड द हिंदी? नो. सो दे आर यूजिंग सम हेडफोन, सो ऑल द थिंग्स आर कन्वर्टेड. द हिंदी इज कन्वर्टेड टू द इंग्लिश. वो एक कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पहले वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वहां पर कुछ ऐसा देश का आदमी है जो जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो वो कैसे समझेंगे क्या बोले ना. उनके लिए सपोज तुर्की के लिए, तुर्की लैंग्वेज के लिए उनका ट्रांसलेटर अलग रहे,
फ्रांस के लिए फ्रेंच लैंग्वेज के लिए उनका ट्रांसलेटर अलग रहेगा, अफ्रीका के लिए अफ्रीकन लैंग्वेज के लिए उसका ट्रांसलेटर अलग रहेगा, तो सबका जेवीएम अलग अलग रहेगा. सो एवरी पार्ट जेवीएम इज अ डिफरेंट. So that is a different translator we are using. So first of all, when we save the Java file, we store with the extension of .java. So by using of Java compiler, it is converted to the .class file, which is called the bytecode. Then bytecode is converted to the machine code by using of JVM. So for the Windows machine code is there. For Unix machine code is there. For Macintosh Unix Macintosh machine code is there. So this is the structure how the Java program is compiled. Next, Java is a distributed language. Java support the TCP and IP protocol. TCP and IP protocol, transmission control protocol, or another is internet protocol. So Java support TCP and IP protocol. TCP and IP. TCP, transmission control protocol, or another is we are using internet protocol. ये दोनों protocol support करता है. IP means when your machine is connected with the internet, so every machine is having or every device is having its own IP address. IP address के मदद से ही हम इंटरनेट में किसी भी डिवाइस को recognize करते हैं. So we are identifying every device in the internet through the IP address. What is the work of TCP? Let's suppose at a time we have the Facebook server. So see that in the Facebook server, billions of people are accessing the Facebook in a fraction of second. तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज अभी का जो टाइमिंग है, सपोज 9:30 को एट ए टाइम 5 जन रिक्वेस्ट भेजे फेसबुक को, मुझे डेटा देखना है. तो ये क्या करेगा, तो डिफरेंट आईपी 5 आईपी एड्रेस इज देयर, IP1, IP2, IP3, तो 5 आईपी, सपोज 4 आईपी से उसको रिक्वेस्ट आया, तो वहां पर टीसीपी क्या करेगा, सेम टाइम पर आ रहा है, टीसीपी क्या करेगा, अच्छा ठीक है आप रिक्वेस्ट भेजो, लेकिन वो क्या करेगा, तो भाई आ जाओ मैं आपको फेसबुक के पास ले जाऊंगा. टीसीपी बोलेगा मैं आपको फेसबुक के पास ले जाऊंगा, लेकिन आपको क्यू में आना होगा. तो IP1 पहले रहेगा, IP2 सेकेंड में रहेगा, IP3 कम्स टू द थर्ड, IP4 कम्स टू द फोर्थ पोजीशन. आप बोलोगे ये कैसे डिसाइड होता है, कौन सा सिस्टम कब आएगा, तो ये डिपेंड करता है योर इंटरनेट स्पीड. इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम दैट यू आर यूजिंग. तो आप एक समय पर 5 रिक्वेस्ट भेज रहे हो, लेकिन किसको पहले रिस्पांस मिलता है, किसको बाद में रिस्पांस मिलता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट. तो हियर मतलब सर TCP can access multiple IP address according to the system. yes, it is accessing the multiple IP. Of TCP और full Okay. meaning of TCP मैम, TCP Yes, का yes. full meaning क्या है सर, TCP का full form क्या है सर? Transmission control protocol. Okay sir. Okay, so it put all the requests into it gather all the IP address, एक सारा IP address को recognize करता है, and TCP also verify that which request I am giving. मैं Facebook को request भेज रहा हूँ, so I am getting the response from the Facebook. So TCP is responsible to put all the requests into a queue, and it also identify the request that I am giving. जो request मैं भेज रहा हूँ, वही response मुझे मिल रहा है कि नहीं. मैं Facebook के लिए request भेज रहा हूँ, मुझे Facebook का response मिल रहा है कि नहीं, वो चेक करेगा, क्या TCP चेक करेगा. IP is called as the internet address or internet protocol. When your machine is connected with the internet, so every device is having their IP address. उसका IP address वहां पर नहीं. So that as Java is supported TCP and IP, so we can use this application in a distributed platform. So Java is a secure language. Java has built-in security feature that verify that programs do not perform any destructive tasks
such as accessing the file in the remote system. Suppose if you ask that, sir, please install the Java software in my device, so I will install it. So before installing, I am giving you a request that you have to accept my request. आप मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे. अगर मेरा रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करते हो तभी जाकर मैं कुछ चेंजेस आपका डिवाइस में मैं कर सकता हूं. टीम व्यूअर में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, आर्मी एडमिन में भी कर सकते हैं, एनी डेस्क में भी कर सकते हैं. तो हियर वी आर शेयरिंग आवर डेस्कटॉप और सिस्टम to the other person present in the different location, but with the permission. It is happening only in the window operating system. लेकिन same thing, अभी विंडो का सिक्योरिटी बहुत अच्छा हो गया है, तो इसलिए आप कोई भी डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करोगे. नहीं तो पहले क्या होता है, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो. लेकिन जब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वही चीज करोगे, लिनक्स इज नॉट अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन. आप टीम व्यूअर आपका मोबाइल में इंस्टॉल करके देखो और आपका मोबाइल से कुछ किसी दूसरा आदमी को बोलो को मेरा स्क्रीन को थोड़ा ऑन इंस्टॉल करना है, किसी भी एक आपको आप ऑन इंस्टॉल करने के परमिशन दो, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है. वो स्क्रॉल भी नहीं कर सकता है आपका विंडो. आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको भी वो चला नहीं सकता है. वो सिर्फ विजिबल कर सकता है, वो सिर्फ देख सकता है, लेकिन कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है. Because Linux, if you want to do any kind of work in the Linux operating system, okay, your Android is backend by the Linux, so you have to give a permission. The Linux is not giving a permission to do any modification or third party application. अगर third party application आप install करते हो, वो आपको warning देगा. It means maybe your security is hampered. If you allow, then you can do it. So that Java is a secure language, as Linux is completely written in the Java. So you are like 100% faith on your data that your data may not be hacked or may not be tampered. The various component of Java. So one is Java programming language and class file. Next is JVM. Next is Java application programming interface. So first of all, Java programming language and class file. Java program are saved with the extension of .java. So Java file is compiled. When it is compiled, it is created .class file. So .class file, it is nothing but it is a bytecode. It is a bytecode. Next, the JVM convert the bytecode contained in the .class file to the machine code. The JVM convert the bytecode into the machine code. So for that reason, JVM needs to be implemented in each platform on the different operating system. So JVM is a platform dependent. So if you are using, if you want to run your Java programming in any device, so first of all you need a JVM. So Java program are saved with the extension of पहले वो .java में store होगा, उसके बाद after compilation it created .class file, then JVM convert this bytecode into the machine code और जो .class file में store है उसको machine code में convert करेगा. So for that reason JVM needs to be implemented for each platform running on the different operating system. तो JVM को आपको different operating system में store करना पड़ेगा. So it is the first part of your Java architecture. Okay, so tomorrow in next class, so we discuss about the JVM and Java programming interface. Okay. Sir, please share the syllabus to me. I just forgot. Today I will do. Okay. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.